Good noon, everyone. Welcome to today's OSSC RI Paper 1 FDD. Okay, let's start. Question number 1. The god with three hands and horns, surrounded by animals represented on a seal from Mohenjo-daro, is said to be option A. Vishnu, option B. Indra, option C. Option A Varuna, option B Indra, option C Vishnu, and option D Pashupati. And the answer is Pashupati. Actually, here is depicted as Proto Shiva. Okay, and the answer is Pashupati. Next, the code of conduct of Vedic society was laid out in which of the following text? Option A Vedas, option B Puranas, option C Upanishad, and option D Smritis. Okay, आमर जो स्मृति गुड़ाक अच्छी से आमर कोड ऑफ कंडक्ट गुड़ाक लिखाई. ओके, तो आंसर होची डी स्मृतिज. नेक्स्ट, व्हाई डिड British government send the Stafford Cripps mission to India in 1942? Option A, the change in government in Britain created a willingness to negotiate with Indians. Option B, to offer India independence after the war. Option C, to seek cooperation of Indians in the war effect. And option D, to negotiate with Gandhi to stop mass struggle for duration of war. Okay, एटी गोटे देखिए देखो स्टाफोर्ड क्रिप्स मिशन. ओके, मेंबर किए थे स्टाफोर्ड क्रिप्स, A.B. Alexander, okay. Stafford Cripps, A.B. Alexander, ଆଉ Patrick Lawrence. पैट्रिक लॉरेंस ये तीन जन मेंबर थिले. अब मेंबर रो चेयरमैन जो होचंती से होचंती स्टाफोर्ड क्रिप्स. एक्चुअली 1942 रे कोन थला हमर सेकंड वर्ल्ड वॉर चलतला. ओके, तो सेथिरे हमर इंडिया रो कोऑपरेशन, इंडियन लीडर राव इंडियन मास कर कोऑपरेशन दरकार से माने कमिटी को पठाइल. ओके, सो आंसर होची सी, टू सीक द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द वार एफर्ट. ओके, नेक्स्ट, with which one of the following did the civil disobedience movement in India commence? Option A Dandi March, option B No Tax campaign by Sardar Patel, option C the unfurling of national flag by Nehru, and option D Mahatma Gandhi's going on fast. Our answer hochi Dandi March or Salt Satyagraha. केबे इतला एटा 24th March 1932, 5th April 1930. Okay, next, when the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October 1947, its reduced membership was केते रिड्यूस कराइतला. एक्चुअली आंसर होची 299. आगु केते थिले 311, एक्चुअली 300 आगु थिले 311, कोडा रिड्यूस कराइतला. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ कॉमन बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज सिंगल सिटीजनशिप, ऑप्शन बी डुअल जुडिशियरी, ऑप्शन सी 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी
A federation supreme court to interpret the constitution. Okay, US रे कौन अच्छी dual citizenship अच्छी. Okay, national citizenship ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ state citizenship. ସେଥିରେ କ'ଣ ଯଦି ମୁଁ ଜର୍ଜିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେଲା ମାନେ ସେଠି ନାଗରିକ କହିପାରିବ କି ଆମେ ଜର୍ଜିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସିଟିଜେନସିପ୍ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଆଉ ୟୁଏସ୍ର ସିଟିଜେନସିପ୍ ବି ଅଛି ଆଉ ଡୁଆଲ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଏଇଠି ନ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ. ଓକେ, थ्री लिस्ट एक्चुअली एटा इंडिया तीन लिस्ट अछि यूएस सेमति किछ नै आ आंसर अछि डी ए फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नेक्स्ट which of the following is not specifically mentioned in article 19 of the constitution? Option A, freedom of speech and expression. Option B, freedom of assembly and peacefully without harm. Okay, option C, freedom to move freely. Option D, freedom of press. Okay, एक्चुअली यार 6टा पार्ट अछि 19 रे 2टा पार्ट अछि गोटे अछि 1 आ गोटे अछि 2. ओके, 1 रो 6टा पार्ट अछि 6टा पार्ट सेतिर होला कोन कोन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ओके, 19 1 ए. सेकंड होला पीसफुल असेंबली. ओके, थर्ड होला फॉर्मिंग एसोसिएशन और यूनियंस. ओके, किंतु फ्रीडम ऑफ प्रेस सेटा दिया जाए तो आंसर होची डी. Next, Article 340 of the Constitution of India provides for the appointment of a commission to investigate the condition for the improvement of option A, scheduled caste and scheduled tribes. Option B, socially and educational backward classes. Option C, socially and economically backward classes. And option D, educationally and economically backward classes. Our answer होची A, scheduled caste and scheduled tribes. Okay, कोटी होची Article 340. Okay, next. The strongest evidence that comets are members of our solar system comes from option A, their composition. Option B, their effect on lives of men. Option C, the shape of their orbits. And option D, the shape and length of their tails. Our answer होची option A, their composition. Okay, आमर अर्थ कोन अर्थ जो जो मैटर रे बना छी एक्चुअली पाखा पाखी समान मैटर रे बना होची ना कोन ना कॉमेट्स गुडा को. ओके, तो तार कंपोजिशन जणा पड़छि कॉमेट्स गुडा को सोलर सिस्टम रो गोटे मेंबर बोली. तो ऑप्शन ए. नेक्स्ट, the permanent tilt of the earth axis and the revolution of earth in its orbit together cause option A, deflection of winds and ocean current. Option B, differences in times between places on different meridians. Option C, third option,
varying length of the day and night at different times of the year. And fourth, changes in the altitude of midday sun at different times of the year. Option कौन अच्छी ऑप्शन ए 1 3 and 4, ऑप्शन बी 1 and 4, ऑप्शन सी 3 and 4, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. देखो ये गोटे जिन चार्टे जिन देखिए कौन फर्स्ट डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट ना एटा भूल अच्छी. नेक्स्ट डिफरेंसेस इन टाइम बिटवीन प्लेसेस एंड डिपार्टमेंट्स ना एटा भी भूल अच्छी. कौन मागिस से permanent tilt of the earth axis and the revolution of earth in orbit together cause कौन cause करे varying length of day and night at different times of the year. एटा ठीक अछि काहे ना day and night cause करछि. next changes in the altitude of the midday sun at different times of the year. हां 23 डिग्री एंड कते डिग्री टिल्ट अछि 23 and half degree. ओके और 23.5 डिग्री. ओके सेति पई अर्थ रे डे एंड नाइट होची आउ altitude no changes in altitude of midday sun at different times of sun. Okay, next question number 11. Doldrums are belts of low atmospheric pressure obtained in the region adjoining the equator to a distance of option A 5 degree latitude towards the north only ना एटा भूल अछि. नेक्स्ट कोन अछि 5 degree latitude towards south only ना एटा भी भूल अछि. 15 degree latitude towards north ना एटा भी भूल अछि. तो आंसर कोटा सी 5 degree latitude towards north and south. देखो हमर अर्थ अछि के एटा ला इक्वेटर. देखो एटा ला 23.5 डिग्री और 23 हाफ एटा हला 66 और एटा हला 90 डिग्री. एटा होची नॉर्थ एटा 90 डिग्री साउथ. देखो एठी एटा 23 एंड हाफ एटा होची 66 एंड हाफ. ओके एठू जो लाइनटा एटा ए जो माने 5 डिग्री नॉर्थ आउ साउथ. ओके 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. ओके ए पार्टटा होची ताको कहा जाय डोलड्रम्स. ओके डोलड्रम्स. नेक्स्ट गोटे काम विंड सेठी माने फ्लो करे वो इक्वेटर नॉर्थ आउ साउथ 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ रे ताको कहा जाय डोलड्रम बेल्ट. गोटे सेटा गोटे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट. कौन सेटा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Take off stage is an economy means option A steady growth begins, option B economy stagnant, option C economy is about to collapse, option D all controls are revoked. Okay आंसर होची steady growth begins. देखो ग्रोथ हमरो चारटा फेज था. फर्स्ट ओके ओके एटा ग्रोथ फेज हला. फर्स्ट ग्रोथ फेज एटा होची लैग फेज, लॉक फेज, स्टैग्नेंट फेज आउ प्लेट्यू फेज हला. लैग फेज जोतरे ग्रोइंग हबो. लैग फेज रे कोन स्टैग्नेंट ग्रोथ हबो. नेक्स्ट स्टैग्नेंट फेज जोठी गोटे बैलेंस आसी जीवो. कोन से डिक्लाइन हेबोनी कि प्रमोशन हेबोनी आ तापरे डिक्लाइन फेज माने खसी खसी जीवो तळको. ओके तो सेटा होची टेक ऑफ फेज माने एटा लैग फेज टेक ऑफ फेज. तार आंसर होची स्टेडी ग्रोथ बिगिंस. नेक्स्ट
The minimum needs program aims to option A provide means for greater mechanization of agriculture. Option B improve the living condition of poor and also promote their education and health. Option C provide necessary resources by way of refinance to primary lenders. Option D none of these. Okay, answer is B minimum needs. Okay, consider improve the living condition of the poor and also promote their education and health. माने जोटा minimum needs दरकार सेटा. Okay, next question number 14. Who among the following received the Nobel Prize twice for the same subject? Option A Frederick Joliot, option B Frederick Sanger, option C Stanley Cohen and option D Marie Curie. Our answer is Marie Curie. क्या रिसर्च करते रेडियम आ से रेडियम ही ताकू पॉइजन है कि ब्लड कैंसर के नाम डेथ हेतिला. ओके रेडियम पॉइजन से केमिस्ट्री कोफील्ड केमिस्ट्री दी थर नोबेल प्राइज पाइथिले. Okay, the answer is Marie Curie. Next, question number 15. Question number 15. Match the following. कौन अच्छी बैटरी वॉशिंग मशीन डायनामो आउ लिस्ट कौन अच्छी electrical energy to mechanical energy, mechanical energy to electrical energy, chemical energy to electrical energy, electrical energy to chemical energy. Okay, यार आंसर होची ऑप्शन ए. ओके बैटरीटा कोन हबो हमर बैटरीटा कोडी कन्वर्ट करबो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी को. आ बैटरी आ भी कोन करि परिबो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट कर परबो. ओके नेक्स्ट कोन अछि हमर वॉशिंग मशीन. ओके वॉशिंग मशीन कोन करबो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी को से कन्वर्ट करबो हला. आ डायनामो कोन करबो मैकेनिकल एंड कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके डायनामो ये जिनसरा मन रखो ये जिनसरा मैक्सिमम एनर्जी कि डायनामो को एनर्जी रे कन्वर्ट करछि. ओके तो कोन करछि से मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Okay, next, a car is running on a road at a uniform speed of 60 km per hour. कितने किलोमीटर पर आवर 60. The net resultant force on the car is option A driving force in the direction of car's motion, option B resistance, option B resistance force opposite to the direction, okay option C an inclined force, option D कौन equals to 0. ओके तो ये आंसर कौन होबो D. ओके equals to 0. ओके एति कौन होबो बाय न्यूटन सेकंड लॉ सेते कौन होबो F equal to ma. ओके if a equal to 0 so F net equal to
0 हो जिवो काई m into a m into कोन m into 0 equal to 0. Okay, so answer is 0. न्यूटन सेकंड रो हिसाब रे कोन हबो हमरो f equal to ma आउ एठी a equal to 0. Okay, so f equal to m into 0 that equal to 0. So f equal to 0. Next, the answer D. Next, question number 17. So rainbow is produced when sunlight falls on drops of rain. Which of the following physical phenomena are responsible for this? A. Diffusion. B. Refraction. C. Internal refraction. Okay. अब आंसर गुडा कहउची आंसर होची C 2 आउ 3 हला गोटे रिफ्रैक्शन आउट होची इंटरनल डिफ्यूजन एतरे कोनसी रोल प्ले करने. नेक्स्ट, an atom has 17 electrons, 17 proton, 18 neutron. Therefore, which of the following are true? A. Its atomic number is 17. B. Its mass number is 34. Okay. काइना न्यूट्रन और इलेक्ट्रॉन मिसी हमरा तो हम तारा मास नंबर हो. तो आंसर होची C. दीटा जगह ठीक अछि. इट्स एटॉमिक नंबर इज 17 आउ मास नंबर होची 35. नेक्स्ट, in which of the following process light energy is converted into chemical energy? आंसर होची फोटोसिंथेसिस. कोथरे दे प्लांट रे रिएक्शन कोन 6CO2 plus 12H2 which gives rise to 66H12O6 plus 6O2 plus energy. Okay, photosynthesis reaction टा एटा कोटे दे photosynthesis हमरो chlorophyll plant. Okay, next, the rate of chemical reaction does not depend upon option A concentration, option B catalyst, option C temperature, option D pressure. आंसर होची टेम्परेचर. केमिकल रिएक्शन टा टेम्परेचर रेट ऊपर डिपेंड करने. ओके, next, the subject matter of Ajanta painting is pertinent to option A Jainism, option B Buddhism, option C Vaishnavism, option D Saivism. आंसर होची बुद्धिज्म. ओके, अजंता केव रो जहा डिपिक्शन थिला सेउडा को जायतिला माने डिपिक्ट कराउतिला बुद्धिज्म ऊपर. नेक्स्ट, द खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वर ऑप्शन ए मंगोल्स, ऑप्शन बी अफगान्स, ऑप्शन सी टर्क्स, ऑप्शन डी ए जाट ट्राइब. आंसर होची टर्क्स. एक्चुअली टर्किश मंगोल थिले. ओके, एक्चुअली आंसर होची टर्क्स. टर्किश थिले गोडा हला. Next, when was the first passenger train run in India? Option A January 1848, option B April 1853, option C May 1857, option D April 1852. आंसर होची April 1853. ओके, केबे रन होतिला 16th April 1853. कोड होतिला from Mumbai to Thane. Okay, so answer होची B April 1853. Next, Raja Ram Mohan Rai organized a historic agitation against the option A caste system, option B evil custom of sati,
ऑप्शन सी डिग्रेडिंग पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, ऑप्शन डी प्रैक्टिस ऑफ सुपरफ्लस रिलीजियस। ओके आंसर होची बी इविल कस्टम ऑफ सती। एक्चुअली राजा राममोहन राय जाना जानती कौन ना प्रोहिबिशन ऑफ सती एक्ट पाई कौन प्रोहिबिशन ऑफ सती एक्ट सेटा केबे पास थिला 1829 रे गवर्नर जनरल के दिले लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक और जदि डाउनलोडिंग पोजीशन ऑफ वुमेन सोसाइटी एटा हेता ताले किए जानता ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट ritual flash floods are associated with actually flash floods are associated with option A thunderstorm, option B cyclone storm, option C tsunami, option D tornado। flash floods कौन देखिए फ्लैश फ्लड्स हमर फ्लैश फ्लड्स पे कौन पे साइक्लोनिक स्टॉर्म पे ओके कहीं ना अचानक वर्षा हो जाए साइक्लोनिक स्टॉर्म पे हेबुटा हेवी रेनफॉल जोटा भी हमर ओडिसा रे देलेंती 1999 रे ओके 2019 रे जोटा फनी जोटा फ्लड टा होई दिला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी आउटर कोर, ऑप्शन सी क्रस्ट, ऑप्शन डी इनर कोर। आंसर होची क्रस्ट। क्रस्ट होची आउटर पार्ट और अपर पार्ट। ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग passes lies in Sutlej valley। ओके सुतलेज ऑप्शन ए नाथुला, ऑप्शन बी जिलिबला, ऑप्शन सी सिपकिला, ऑप्शन डी सेरा वथंगा। सेरा वथंगा। ओके अब आंसर होची सिपकिला। सिपकिला पास जोटा सतलुज वैली रिवर वैली रे अछि। ओके next which of the following taxes is exclusively and totally assigned to the central government by the constitution? Option A state duty, option B sale tax, option C taxes on railway fare and freights, option D corporation tax। आंसर होची ऑप्शन डी corporation tax जोटा पर्टिकुलरली सेंटर को हमने सेंटर पाई ऐसा नहीं छी। देखो स्टेट ड्यूटी सेटा भी शेयर हो सेंटर ऑफ स्टेट भीतर, टैक्सेस ऑन रेलवे फेयर एंड फ्राइट सेटा भी शेयर हो, सेल टैक्स टा हमर के रखे स्टेट टा किंतु शेयर भी सेंटर को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 the joint session of both the houses of parliament is summoned by option A speaker of Lok Sabha, option B president, option C prime minister, option D chairman of Rajya Sabha। आंसर होची बी प्रेसिडेंट। और को आर्टिकल अंडर जाउ जेटा आर्टिकल 108। ओके जॉइंट सिटिंग आउ जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन ओके कौन पे दरकार जदि कोनोसी बिल टा पास ही परनी तार जदि जॉइंट सिटिंग दरकार हला ताले कि जॉइंट सेशन दरकार हला सेति पई प्रेसिडेंट समन करती आ जदि किछि
अदर कंट्री स्टेट हेड आसिले ट्रिब्यूट देवा जदि दरकार पड़े ताले जॉइंट सेशन कि जॉइंट सिटिंग रखा जाए ओके नेक्स्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑल मनी बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर टू रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ ऑप्शन ए गवर्नर ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन सी पार्लियामेंट ऑप्शन डी प्रेसिडेंट आंसर होची ऑप्शन डी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट करो कंसिडरेशन पाई रखा जाए हमरो इमरजेंसी इमरजेंसी केते टाइप थाए तीन टा इमरजेंसी कौन आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 आर्टिकल 360 ओके एटा हला नेशनल इमरजेंसी एटा हला स्टेट इमरजेंसी और फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स ओके आउ कौन कहती ओके और 360 टा हला फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके तो सब इमरजेंसी सब पावर वेस्टेड को हमर प्रेसिडेंट के ऊपर तो आंसर होची डी नेक्स्ट द इंस्ट्रूमेंट ही यूजेस साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन इज ऑप्शन ए radar ऑप्शन बी सोनार ऑप्शन सी अल्टीमीटर ऑप्शन डी वेंट्यूरी मीटर ओके अब आंसर होची सोनार ओके सोनार अब जो एटा यदि लैंड रहिता और एयर रहिता ताले आंसर बनता कोना radar ओके अल्टीमीटर टा कोना अल्टीट्यूड मेजरमेंट पाई ओके सो आंसर होची सोनार नेक्स्ट पिक्नोमीटर पिक्नोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द ऑप्शन ए डेंसिटी ऑप्शन बी इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन ऑप्शन सी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक ऑप्शन डी हाई टेंपरेचर अब आंसर होची ऑप्शन ए डेंसिटी ओके तो कौन है a picnometer is a glass flask used to measure the density of liquid and solid okay कौन density of liquid and solid okay so it can also measure the relative density of the liquid and solid the term picnometer okay हम जो term टा अछि picnometer Picnometer comes from the Greek word puknos. Kono? Puknos. P-U-K-N-O-S. Puknos. Which means density. Density. Okay. Next. If the temperature of a place increases suddenly, the relative humidity ऑप्शन ए इंक्रीजेस ऑप्शन बी डिक्रीजेस ऑप्शन सी कांस्टेंट ऑप्शन डी फ्लक्चुएट्स ओके अब आंसर होची डिक्रीजेस जेमती हम भुवनेश्वर को जो टेंपरेचर बढ़ी गला ताले ह्यूमिडिटी टा डाउन हो जाए और डिक्रीज हो जाए ओके नेक्स्ट The anode in a dry cell consists of option A copper, option B zinc, option C cadmium, option D graphite. How? এটা হচ্ছে
जिंक आंसर होची जिंक एक्चुअली जिंक टा एनोड थाए आओ कार्बन कार्बन टा थाए कैथोड ओके आमर बैटरी टा केमती थाए डिटेल बैटरी स्ट्रक्चर देखने है ओके फास्ट ऊपर कौन थे ऊपर गोटे ब्रास कैप थाए ओके ता तले कौन थाए इन्सुलेशन ता साइड रे एडा होची एटी थाए मुस्लिन बैग ओके एटी थाए पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड ओके एटा होची कार्बन रोटा रोटा कैथोड थाए आउ ए जो कैविटी भीतर जो मुस्लिन बे आउ ता भीतर थाए कौन ना मैंगनीज ऑक्साइड आउ कार्बन तार मिक्सचर थाए सॉरी MnO2 आउ कार्बन रो मिक्सचर थाए नेक्स्ट द pH of human blood is between option D 6.5 to 7 option B 7.5 to 8 option C 8 to 9 option D 4.5 to 5 आंसर होची B 7.5 to 8 एक्चुअली ब्लड रो pH टा होची स्लाइटली अल्कलाइन next detergents used for cleaning clothes and utensil contains option A nitrates option B bicarbonates option C sulfonates option D bismuths so answer होची sulfonates compound टा से डिटर्जेंट रे थाए नेक्स्ट क्लोव लवंग जोटा ओके क्लोव द commonly used spice is obtained from the fruit root stem और flower bud एक्चुअली तारा फ्लावर रो बॉड रहते ओके देखो ये गोटे प्लांट है ओके एटी कोन ना फ्लावर थिबो एटी जो बॉड टा गुडा थिबो ये फ्लावर बोर्ड रु आमर कौन हुए क्लोव टा हुए क्लोव रो ओडिया ना कौन लवंग ओके नेक्स्ट द vitamin which helps in clotting of blood is option A vitamin A vitamin B sorry option B vitamin D ऑप्शन सी विटामिन बी ऑप्शन डी विटामिन के आउ आंसर होची विटामिन के पोटेशियम एक्चुअली केटा कोन पोटेशियम ब्लड क्लॉटिंग रे हेल्प करे नेक्स्ट ए पर्सन विल हैव ब्राउन आईज ब्लू आईज और ब्लैक आईज डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑप्शन ए प्यूपिल ऑप्शन बी कॉर्निया ऑप्शन सी आइरिस ऑप्शन बी कोरस
ओके आम आखिटा स्ट्रक्चरटा केमती थाए ओके एटा होची आईलिड ओके ए भीतर पार्ट जोटा होची प्यूपिल आउ ए पार्टा एटा होची आइरिस आउ ये व्हाइट पार्ट थाए सेटा होची स्क्लेरा स्क्लेरा आउ जो कलर जो रेस्पॉन्सिबल जा पाई जो ब्लैक आई ब्राउन आई ओके सेटा होची आइरिस आइरिस पाई ओके आंसर होची सी आइरिस नेक्स्ट the basic object of all production is to option A satisfy human wants, option B provide employment, option C make profits, option D increase physical outputs, option okay option C make profits, option D make physical output our answer होची option A satisfy human wants जहाँ भी प्रोडक्शन होची कोन हमर निजर कंजूसन पाई हमर निजर वांट गुडा जो इच्छा गुडा को माने जहाँ भी दरकार अछि सेडा सैटिस्फाई करिया पे ओके नेक्स्ट if in a filament type of light bulb most of the electric power consumed appear as option A visible light, option B infrared rays, option C ultraviolet rays, option D fluorescent light ओके हमर फिलामेंट बल्ब जोटा सेते कोन यूज हुए टंगस्टन टंगस्टन ता भितरे कोन हुए आस्ते नाइट्रोजन ओके तो आंसर होची इंफ्रारेड रेज कोई सा अपियर हुए इंफ्रारेड रेज नेक्स्ट which of the following groups of gases contributes to the greenhouse gas effect option A carbon dioxide and methane, option B ammonia and ozone, option C carbon monoxide and sulfur dioxide, option D carbon tetrafluoride and nitrous oxide our answer होची सबटर हाईएस्ट कोटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन सबटर मैक्सिमम ओके CO2 and this okay next in which house is the presiding officer is not a member of that house अब आंसर होची राज्यसभा राज्यसभा चेयरमैन की सी होचंती हमर वाइस प्रेसिडेंट ओके वाइस प्रेसिडेंट से हाउस रो कोनसी मेंबर नांती वाइस प्रेसिडेंट को एक्चुअली कोनसी रोल नहीं हमर एठी किंतु जदी से प्रेसिडेंट रो एब्सेंस से कोन प्रेसिडेंट रो सडन डेथ हला कि रेजिग्नेशन हला से एज ए प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट से एक्ट करि परिबे ओके एक्चुअली लोकसभा रो जो प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर थांती एक्चुअली से कोन ना लोकसभा रो मेंबर थांती आको जते बेले से एज ए स्पीकर और प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर चूज होंती से कोनसी पार्टी को माने सपोर्ट करन किंतु एज ए मेंबर रहंती ओके बाकी सबरे एज ए मेंबर रहिबे लोकसभा रे भी विधानसभा रे भी आओ विधान परिषद रे किंतु राज्यसभा रे
ରହିବେନି କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟସଭାର ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। Next, the longest river of Europe is option A Rhine, option B Rhone, option C Danube, option D Volga. आंसर होची वोल्गा। वोल्गा कोठी होची रशिया रे। ओके रशिया। नेक्स्ट, for annexation of which kingdom the doctrine of lapse was not followed? ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी पंजाब। आंसर होची ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब को वार रे एक्चुअली जीतली ब्रिटिश गुडा को हमरो महाराजा रणजीत सिंह तांकर डेथ परे ताकि ना हमरो टोटल जो आर्मी थिले एशिया रे ब्रिटिश आर्मी सब टॉप रे थिले ता तल को थिले महाराजा रणजीत सिंह र आर्मी। ओके एबे देखिनेबा डॉक्टर फर्स्ट कोटे जिंस अछि डॉक्टर एंड ऑफ लैब्स के इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड डेलहाउसी। लॉर्ड डेलहाउसी। केबे इंट्रोड्यूस हेतिला 1848 टू 1856 भितरे। ओके आ को स्टेट गुडा को एनएस हेतिले देखो फर्स्ट स्टेट सतारा। सतारा केबे हेतिला 1848। सेकंड स्टेट जयपुर आउ संबलपुर ओडिशा केबे हेतिला 1849। थर्ड को स्टेट हेतिले बाघाट केबे हेतिला 1850। फोर्थ रे कोन उदयपुर एटा राजस्थान नो छत्तीसगढ़ केबे हेतिला 1852 रे। नेक्स्ट झांसी केबे हेतिला 1852। सिक्स्थ नागपुर केबे हेतिला 1854। नागपुर आउ अवध दुईटा हेतिले। ओके नेक्स्ट तांजोर एंड आरकट केबे हेतिले 1855। ओके तो ए सिक्वेंशियली ए स्टेट गुडा को एनएस्ट हेतिले डॉक्टर एंड ऑफ लैब्स रे जो ये इंट्रोड्यूस करथिले डॉक्टर लॉर्ड डेलहाउसी केबे पन हेतिला 1848 रु 1856 भितरे हेतिला। नेक्स्ट match correctly the nutrient deficiency given in the list. Which the disease caused by the deficiency given in list रे कोन अछि iodine, iron, niacin और vitamin B12। ओके लिस्ट कोन अछि माइक्रोसाइट एनीमिया, दुई नंबर अछि पर्सनिशियस एनीमिया, नेक्स्ट अछि गोइटर, नेक्स्ट अछि पेलाग्रा। आयोडीन डेफिशिएंसी रे कोन होय आयोडीन गोइटर। ओके गोइटर। ओके आयरन डेफिशिएंसी रे कोन होय आयरन डेफिशिएंसी रे हमर होय माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ओके नियासिन डेफिशिएंसी रे कोन होय पेलाग्रा। आ विटामिन B12 डेफिशिएंसी रे होय पर्निशियस एनीमिया पर जोटा सीवियर फॉर्म ऑफ एनीमिया। सो आंसर होची डी 3142। Okay, next, a man standing on the edge of cliff throws a stone vertically upward with a certain speed. He then throws another stone downward with the same speed.
with the same speed, find the ratio of the speeds of the two stones when they hit the ground. Okay, the answer kona, a person standing on the edge of cliff at some height above the ground throws first ball straight off an initial velocity u, and then throws the second ball straight down the initial velocity u. तो कौन होगा आंसर होची 1:1. ओके, वन इज टू वन. देखो एट द सेम स्पीड हो तो एठरे कौन होगा v इक्वल टू u प्लस at, दैट इंप्लाइज 0 इक्वल टू u माइनस gt. ओके, then final velocity on reaching the top is 0 and negative sign is due to downward acceleration, that equal to कौन होगा t u equal to gt, जोटा इक्वेशन 1 है. ओके, नेक्स्ट while coming down कौन होगा v equal to u plus at. ओके, that implies minus v equal to 0 minus gt, that is negative sign is due to downward direction. Okay, that implies v equal to gt. जदि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आमे नपा तो कौन बारिबो v equal to u. ओके, तो रेशियो कौन 1:1. सो आंसर होची a. नेक्स्ट, which Indian industry is employing large number of workers? Option A, iron and steel industry. Option B, textile industry. Option C, jute industry. Option D, sugar industry. Our answer होची A, iron and steel industry. So highest. Okay, next, residuary powers under the Indian Constitution means option A, the powers relating to international affairs. Option B, the powers relating to international emergency. Option C, the powers which can be exercised by both by the Union government and state government. And option D, the powers which have not been specifically enumerated in the Union list, state list and concurrent list. Okay, our answer होची D, the powers which have not specifically enumerated in the Union list, state list and concurrent list. देखो हम एटा कोथरे जोची रेसिडुअरी पावर टा आर्टिकल 248. ओके, हमर 7th शेड्यूल रे एटा जाउची. 7th शेड्यूल रे कोन इंटा लिस्ट अछि परा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट आउ कंकरेंट लिस्ट. आ जोटा ए तीन थी जाउनी सेटा गोटे जाउची कोटा कोन कोथरे रेसिडुअरी पावर. सा को जाय रेसिडुअरी पावर. जमती हला एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी. ओके, नेक्स्ट, the rustless iron period at Mehruli, Delhi was elected by option A, Mauryas, option B, Kushans, option C, Guptas and option D, Sadhavanas. Our answer होची Guptas. Okay, कोटो जेटा Mehruli, Delhi. Okay, pillar is 7.21 meter height. और डायमीटर टा केते 41 सेंटीमीटर. ओके, वेट केते वेट टा होची 3000 किलोग्राम्स. ओके, बिल्ड बाय
चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड ता पीरियड कौन थिला 375 इसी टू 450 ओके। अब केमती बनाई थिला 98% ऑफ रस्ट आयरन रस्ट आयरन ओके। सॉरी एटा बीसी नो एटा 88 एक्चुअली 80 एटा 375 रु 375 80 रु 415 80 बंद आउ डेथ केबे हितिला चंद्रगुप्त टूंगर डेथ केबे हितिला डेथ टा 410 80 410 80 ओके। सो आज डिस्कशन रे एटा रखिबा काहे कि हमरो 50 टा क्वेश्चन पूरा हैला। थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट टाइम आ गोटे एफटीडी रे देखा पुणी पुणी डिस्कशन करवा जीएस पेपर टा ओके। थैंक्स।